हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, फॉर a streamlined flow for a fluid, the mass entering per second at one end of a tube is equal to the mass of the fluid leaving per second at the other end. रिमेंबर, हम यहाँ पर एक आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, एक ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। लेट अस सपोज हमारे पास एक ट्यूब है, इसके दो एंड्स के दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं और इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है कि जितना मास इस ट्यूब में एंटर करेगा पर यूनिट टाइम, उतना ही मास फ्लूइड का इस ट्यूब से लीव करेगा पर यूनिट टाइम। लेट m1 be the amount of fluid entering per unit time and m2 be the amount of fluid leaving per unit time. Then dm1 upon dt is equal to dm2 upon dt. Now mass is equal to density into volume, so I can write d by dt of rho v1 is equal to d by dt of rho v2. Now density इसमें एक constant term है, तो इसका मतलब ये तो चेंज नहीं होगी थ्रू आउट, सो I can write dv1 upon dt is equal to dv2 upon dt. यहाँ पर ध्यान रखें कि जो v1 v2 है, कैपिटल v1 कैपिटल v2, these are the volumes of the fluid which are entering and leaving the tube respectively. Let us suppose t amount of time में, t seconds में this much amount of fluid has entered the tube. The distance traveled by this fluid, let this be x1. And उतने ही टाइम में, that is t time में, this much amount of volume has exited the tube. Let us suppose इसकी length है x2 and area of cross section will be a2. Then we can write the volume of fluid which has entered the tube will be area times the distance, that is a times x1. It will be equal to, it's a1 times x1, this will be equal to d by dt of a2 times x2. Now area तो constant है, time के साथ change नहीं हो रहा. It means I can write a1 dx1 upon dt. dx1 upon dt will be the velocity of fluid at the entering point. जब fluid enter कर रहा है तो उस point पे उसकी कितनी velocity है v1, and जब exit कर रहा है then dx2 upon dt will be equal to v2. So this is the equation of continuity. और अगर हम इस ट्यूब में कोई एक जनरल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं ऑफ एरिया ए, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस क्रॉस सेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, फ्लूइड की वेलोसिटी है v, देन आई कैन राइट a into v is a constant quantity. This is also another form of equation of continuity. This is why you must have observed that while watering the plants, if we put a thumb at one end of the pipe, then we are basically reducing the surface area of the, that is cross sectional area of the tube. और अगर हम थंब से क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर देते हैं तो वाटर की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द प्रोडक्ट हैज टू बी कांस्टेंट. तो अगर हम एरिया डिक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी. दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. So I hope this topic is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.